Hey guys, I'm Sushil Kumar Mahto. Okay, I'm CCIE Security Trainer and Cyber Security Trainer. I do have experience of more than 18 years in this particular domain. Okay, and here I'm to clarify about your career path. Many of you guys might have blur vision regarding your networking career and many other stuffs, right? So today I'll give some visibility on how can you pursue your networking career and what way we can guide you, right? That part I'll be showing you today. Plus I'll show you like as a fresher how many job opportunities are there in a market, what key skill sets if you guys add in your career, what type of opportunities you'll be getting, and what numbers of, तुमने सुना ये you know. करियर गाइडेंस सेशन? Yeah, guys, please mute. अगर तुम फील्ड में आगे बढ़ना है तो कैसे बढ़ना? So I'll show you what key skills if you guys get added in your career, then what type of opportunities you'll be getting and what type of packages you guys will be getting in a future jobs. Okay, that's the main point of our today's session. Understood? Uh, See, when we start a networking career, we start with CCNA, right? CCNA is our fundamental basics. We start with our CCNA. Then what you guys do? CCNP Enterprise, correct? After doing enterprise, you go for advanced level of enterprise things, right? Basically, you're making your routing and switching more strong. Correct. CCNA gives you fundamental of networking. On top of that, you build your networking. I mean, more routing and switching concepts you guys are going through, right? And once your fundamental is very good, on top of that, you guys can build multiple tracks. Like Cisco has multiple tracks, right? They have data center, service provider, security, cyber security. Now Cisco also has come up with their own cyber security courses as well. So there are multiple courses, multiple tracks. So where should you move? In which path should you move? That's basically the session about today. Okay. At the end of session, if you guys have any queries, questions, you can definitely ask me. Okay. But before that, let me show you opportunities wise at which label, what type of opportunities you have in a market. Okay. Let's say I'll take you guys to any job portal site. Like you guys know multiple job portal sites, right? Like Naukri.com, Indeed.com, multiple sites are there. Guys, please mute. All right. Now let's say I'm searching some job based on CCNA key skills over here. Okay. I selected CCNA and I'm selecting fresher. Let it be any location in India. If I search here, how many numbers of job you can see here? 120, 124, right? Total jobs we have between 1 to 20 out of 124 for CCNA, right? Now, in this also, if you see the packages over here, if you see package over here, what is the package you are getting? 2.5 to 3.5 lakhs. Correct. This type of jobs you are getting in a market. But we are not expecting our students to get package of like 2 or 3 lakhs. Okay. If you really work hard, if you really get a good technical skills, you can get a good package of 6 to 7 lakhs as a fresher. It can be more than that. Now, what type of key skills should we add in our career to boost our career plus packages, right? Now, let's say for example here, I'm adding CCNP, okay? And then if I search for a job, what do you see? सिमरन, Around same type of 8 जनवरी jobs तो you नहीं see, बोला था आपको? right? Guys, 8 please mute. जनवरी तो मैंने नहीं बोला था। Guys, please mute. But if I try adding something special, which are currently trending in a market, like, see, we have different types of networks, right? We have data centers, we have service providers,
We have bank, we have multiple other type of infrastructures, right, in a networking. Do you think they are unsecure all the time? No, right. They all are secured. They are secured with what? Multiple security products. So what security products do you guys know? In a networking, what type of security products you guys know? Firewall. Okay. Let's say, what are the topmost firewalls, guys? Where do you see the topmost firewalls? Palo Palo Alto. Alto. Where do you see? How do you come to know that which are the topmost firewalls in a market? We see based on Gartner Magic Report. Are you guys aware of what is Gartner Magic? See, Gartner Magic is one of the organization which does the analysis for all the type of networking products. Okay, and they release quarterly reports. Now, see, this is one of the Gartner Magic Report. These are available online as well. You can download it from any websites. Now, here, if you see, as per Gartner Magic Report, you can see this is Gartner Magic Report, right? It's of 2025 July. I'm giving you a recent report. Now, which firewall is at the top? Fortinet. Fortinet is company. FortiGate firewall is top firewall. I mean, Fortinet product is FortiGate. So FortiGate firewall is at the top right now. See, I'm not telling this part. Who is telling? Gartner Magic it is telling. And who is Gartner Magic? It's a global organization, you can say, right, who does analysis for all the type of security products, right? Now they do analysis for all the type of products, not only for firewall. You guys can search for SD-WAN, you can search for any other type of router, switches, any other products also you can search, right? So right now I have searched for firewall here, and you can see as per the current status, if you see under the leaders, which firewall do we have? We have Fortinet firewall at the top. And what we have second? Palo Alto firewall. And third, we have Checkpoint firewall. Right. See, Checkpoint firewall depends. Depends on area where you actually work. Okay. Everywhere in India, Checkpoint does not have a demand. But in Bangalore, recently, they have set up their own workplace, plus data centers and all, plus tech support also they have currently started in Bangalore. You know, Checkpoint is actually Israel-based company, and there is recently war going on with Israel, right? So Israel has shifted many things to Bangalore right now. For that reason, job opportunities for Checkpoint has increased in that particular area. In a south part, if you say, demand for Checkpoint firewall has increased. Checkpoint firewall was actually introduced in 1993 or 1994, Israel-based company. If you see here, if I show you some Wikipedia of Checkpoint firewall, interesting things I'll show you guys here. So when was this company introduced? In 1993, around 33 years ago. This firewall is one of the earliest firewall. Checkpoint firewall is known as one of the earliest firewall which was introduced in Israel, okay, at this particular place. Okay, so here you can see in Ramat Gan, Israel, it was introduced. Gil was the founder of this particular company. And very interesting part I'll show you guys. Here, in this particular company, I mean, in a Checkpoint team, you guys can say, there was a guy called Nirjuk. See, read this line. Over the years of many employees who worked at a Checkpoint firewall had left to start their own software companies. Now see, there was a guy called Nirjuk who founded Palo Alto Networks.
Okay, Guys, yeah. please See you mute. then. Yeah. Guys, please Yeah. mute. Understood. It means who was the founder of Palo Alto Firewall? Nirjuk. And where was Nirjuk working? It was working under Checkpoint team. You guys getting my point, what I'm saying? Nirjuk was a founder of Palo Alto Firewall. And this guy was working earlier under Checkpoint team. Understood. If you see Palo Alto Firewall, Wikipedia, this firewall was introduced in 2005 and it's a California based company. It was founded in 2005 and it was California based company. Can you see this? Can you find a relation? Palo Alto guy was working under Checkpoint team who left that company and started their own company in 2005. And today that guy is telling I'm a top firewall. You guys able to relate, right? See, today this firewall, Palo Alto firewall says I'm a top firewall. Okay. When was FortiGate firewall introduced? FortiGate firewall was introduced in 2000. Okay. FortiGate firewall, Wikipedia, if you see, it was introduced in 2000. You see, 2000 it was introduced. This is also US based company, right? Earlier, FortiGate firewall didn't take much market. Okay. The first firewall you can say in terms of next generation firewall. In terms of next generation firewall. See, earlier to Checkpoint, we had Cisco firewall. There was Pix firewall. Then they introduced ASA firewall. Okay. And then in between, there was Checkpoint firewall as a next generation firewall. You know what is next generation? Next generation means what? You had keypad mobile phone, right? Now you have a smartphone. Why? Next generation. Understood. This is meaning of next generation. So earlier firewall had a less features. Now firewalls has more features in a single box. Understood. Earlier we had multiple things like web filterings, like separate device, antivirus separate device, right? Application filtering separate device. But now what we have, all the features in a single device inside a single operating system. That's why we call it as a next generation firewall. Understood. Now what happened is Fortinet firewall is currently showing you at the top. Fortinet is a company, FortiGate is the product. Second, we have Palo Alto. And third, we have Checkpoint. Let's see other reports of previous years. I'll give you a report of 2-3 years so that you guys can identify it. You'll have some visibility. Okay. Okay. This is 2020 Gartner Magic Report. 2020. Which firewall you have at the top? Now, in 2020, Palo Alto was at the top. Since 2016, Palo Alto has acquired Asian markets. And since that time, it is one of the top firewall. See, this competition will keep happening, right? Today, FortiGate is up. Tomorrow, Palo Alto will go up. Day after tomorrow, another vendor will come. That will say, again, hey, today I'm coming with AI and ML type of features. So slowly, these competitions will keep happening. There is no end of this type of competitions. But you have to see what are the current top firewalls, right? So currently, if I see, guys, please mute. Currently, if I see,
As per 2020 Gartner Magic Report, which firewall was at the top? Palo Alto firewall. Second was Fortinet. Third was Checkpoint, and fourth was Cisco. And then you see the other firewalls as well, right? Now you might be thinking, like, what about the other firewalls? Aren't they good firewalls? See, I'm not saying about good or bad. I'm saying as per the report, which are the top firewalls. Now, these top firewalls are categorized based on multiple things like feature wise, cost wise, support wise, right? Now, let's say I have a good product, but if I don't give you a good support, what will be image, right? So overall, looking at everything cost wise, right, and support wise, and many other factors like update, how less vulnerable your devices are. Vulnerable means what? Weakness, right? So how efficient the devices are in a market, based on that they evaluate the things in a market, right? So quite a stable type of product. If you see in a market, we have Palo Alto firewall, then we have Fortinet firewall, then Checkpoint, then Cisco, and then any other stuff. But a recent report, if you see the recent report of Gartner Magic, this is 2025. At the top, Fortinet, Palo Alto, Checkpoint, then Juniper. See, Juniper again has a multiple stories. Okay, there was a NetScreen firewall. NetScreen firewall was acquired by Juniper. Now Juniper has been acquired by HP. So HP has recently acquired Juniper firewall. You can see HP. They have acquired it. Okay. These things will keep happening, guys. Okay. Moral of the story is we have to focus on top firewalls in a market. Okay. Now, just few things I'll be adding in my key skills. Okay. I was on a job portal right here. Here I'll go for network security engineer. And if I search for a job, okay, I'm not getting much. Let me add much over here. Network security, let me remove this CCNA. These are impacting the other one as well. So I don't want jobs based on CCNA. I want jobs based on network security engineer. I'll add some Palo Alto firewall. Okay. I'll add some FortiGate firewall. If I add this type of key skills and if I keep searching for it, wait guys, wait. Now let me search here. Let's say network security. Let me say network security engineer. I'll select a FortiGate firewall. I'll select Palo Alto firewall. Let me select only this much as of now. See what I have selected. Network security engineer. Okay. And I have given some firewalls over here, right? And if I search job based on these factors, how many jobs are we getting, guys? See, I haven't done anything else right now. What I did is I just added a key skill into my career. I just had a CCNA or I had a CCNP, right? What was the opportunity level? It was somewhere around 100 or something like that. But once I added a key skill in myself, right? I added some good key skills, like I added the topmost firewalls of the market. And how did I understand the topmost firewalls of the market? Based on my Gartner Magic Report. And this Gartner Magic Report is not built by me. It was built by the organization. It's a global organization. And as per the global organization, if you see, they have given the topmost rated firewalls. And when I added these topmost rated firewalls in my search engine, what did you see? What was the magic? 6,134 search
engines. I mean, jobs are coming. Now, if you see, as a fresher, I want to see jobs over here. See, somewhere you might see experienced type of stuff, right? I mean, experienced jobs and all. But you can search jobs based on freshers as well. Less than a year also, if you see, you'll get multiple jobs. Okay. So basically, if I start my career with network security engineer or a cyber security engineer, I'll come later to a cyber security. First of all, I'm dealing with network security engineer. Okay. So when you search for such type of jobs, you will see in today's date, no one is only asking for one particular stuff, guys. They are not asking you for one particular type of, uh, you know, key sets, key skill sets. Like they are not asking you only for CCNA or CCNP or any other stuff. They need multiple things, like multi-vendor. You have to design yourself with multiple things. Understood? Now see, this is one of the posts that I can show you here. It says like 0 to 4 years of experience. Location is Bangalore, currently showing. Right. I need an internet engineer. Right. And here you can see the type of requirements they are showing you. See the type of requirements. They want someone who is aware of firewalls. They haven't mentioned any particular firewall, but they are showing that they need some firewall engineers. They also should know IDS and IPS, and they also should know some SIEM type of product. Now, see, these are the type of products which you should put in your career as a key skill set. Understood? Now, this type of things, where are you going to get it? What type of course, if you do, you'll get this type of products? We have something called as a CCIE Security. You guys have heard about CCIE Security, right? Now, when you go for a CCIE Security, you get all the type of products which are currently available as per the job market. Now, see, these are the devices that you learn in your CCIE Security. Now, see here. Here we learn about firewall, we learn about identity service engine, we learn about cloud web security, we learn about digital network architecture, email security appliance, FTD, NGIPS. Do you see NGIPS here? This NGIPS device is nothing but it's IPS and IDS. Okay. See, I'll tell you one thing. What happens when you learn any particular track? What is the impact of that track on your career? I'll tell you. This is CCIE Security, current version is 6.1, right? If you do this course, you guys can go for multiple types of job roles, like you can go for associate security engineer, network security engineer, information security analyst, information security engineer, this type of job roles. Apart from that, you guys can go for firewall engineer job roles or security engineer job roles, right? Now, here if you see, as per Cisco curriculum, they have given multiple type of technologies here. They have given multiple technologies over here. See, what's the benefit of having multiple technologies? When you learn this type of technologies, what happens? You're actually adding key skill sets to your career. More opportunities. Right now, what I did in a job portal site, I just added few more firewalls, right? And I could see there was huge difference in a search engine, right? I had more jobs based on the current firewalls that we had in a market, like Palo Alto, FortiGate, Checkpoint. If I added, I could see number of vacancies were more in a market. Correct. That is called key skills, guys. Okay.
Now, there are the companies like Barracuda, okay, like Sky High, CSS Corp, top companies, right? If you go for their jobs and all, you need to have this type of key skill sets in your profile. Very important. And if you want a good package, if you want a package at 6 to 8 lakhs as a fresher, you really need to work on your career, guys. Okay. Now, see, when you are having diversified type of knowledge, right? I mean, if you have knowledge on multiple type of products, your opportunities will increase. Understood? Like here you see, we have identity service engine, we have WSA. What is WSA? Web security appliance. You all are using internet, right? On internet also, we have attacks, right? In fact, internet is one of the main source of attack. So how do you filter web traffic? How do you filter your email? Through emails also multiple type of attacks are happening, right? So how do you filter such type of attacks? In 2017, there was one of the world's biggest attack via email. Have you guys heard about it? Do research later. I'm just telling you a name of that particular attack. In 2017, there was WannaCry ransomware attack. It was noted as world's largest cyber security attack. Okay, there was an attack called WannaCry attack, and this attack was actually performed via email. So when anyone clicked on that email, it used to bypass all the security products and they used to get access to their servers. You know what is ransomware attack? Yes, sir. Yes, yes, sir. Yeah, tell me, what is ransomware attack? जो फिरौती मांगता है Correct. They will encrypt the entire data of your system. You can't access anything. And they'll just pop up one message that you have to pay a certain amount. And they won't accept amount in UPI or something else. They'll accept, payments in crypto or some other type of payment methods and all, right? So ransomware attack is one of the topmost attack in your internet world, right? So basically what I'm trying to tell you is our networking or whatever we have in our network, like devices like routers, switches, or whatever type of works we do in a network, like we have a banking sector, we have airport, we have many other stuff, right, going on. They all need a security. And when they need a security, you have to know the security products. So there are multiple type of traffics in our network, right? We have web traffic, we have email traffic. So I need a device which can actually protect from this type of vulnerable networks. And when you learn this type of, key skills, when you learn this type of products, that really helps you to grab a good opportunity in a market. That's what I can say. Okay. Say it's not only about web security, email security, there are multiple other things, multiple other type of products we have. So overall, what I'm trying to tell you is, if you want to get collective information about all these security products, then you have one choice, that is CCIE Security. That gives you multiple products information and it opens multiple paths for the job. Now let's say I want a job based on email security. Barracuda is a company. It has multiple branches. They work based on email products only. They work based on proxy devices. Proxy device is nothing but your email security and web security. They work based on these two products only in a market, right? If they hire you, they'll make you work on these two products in a market. They won't hire you for other products as well. Okay, so they are dedicatedly working for ESA and WSA. They won't hire you for ICE device. ICE
is Identity Service Engine. I'll tell you a little bit about all these products. Okay. So what I'm trying to tell you is there are hundreds of company and hundreds of opportunities are there. You should be capable for you need to prepare yourself for those opportunities. That's what I'm trying to tell. Okay. For example, if some companies are hiring you for ICE engineer, as a ICE engineer, you need to be prepared for the ICE itself, right? So separately, if you do a course of ICE, that will cost you a lot. Separately, if you go for WSA, email security, or firepower devices, these all are security products, guys. If you individually go for all these products, it will cost you very high. But overall, if you go for integrated type of program, we have something called as a integrated program. What is integrated program? Like you're taking one package, like you're going for CCIE security. In that CCIE security, you're going through all these products. Additionally, whatever we need as per the market, I told you what are the top firewalls, Palo Alto, Checkpoint, FortiGate, or whatever the top firewalls we have based on area, guys. Checkpoint firewall is not that famous in this area, Delhi area or Noida area. If you ask me, it's not that famous. You won't get that opportunities compared to Palo Alto or a FortiGate firewall. So in this area, if you guys are looking for a job, key skills should be FortiGate firewall, Palo Alto firewall. Recently, we have purchased FortiGate firewall. I mean, we have purchased a hardware, physical hardware, and that licensing I'll be doing day after tomorrow. And again, I'll take a live session where I'll show you guys how to register that firewall itself. Okay. It's not about a demo. It's not about anything else. It's about a licensed, pure license with all the features activated. Okay. In a real time, whatever features are required to prevent the attack, we'll be doing that. We'll have that license. And we are also getting Palo Alto physical firewall. So this weekend, I mean, by the end of this week, we'll be getting our physical Palo Alto firewalls as well. So our focus is to give you experience on a real time. If you guys, work with the licensed devices, physical devices, you'll have more opportunities to understand the things properly. Okay. We'll deploy our firewall in a network and we'll apply real time filtering and we'll show you all those features. So see, overall, I'm giving you visibility, like what type of key skills if you get added in your career, then what type of job opportunities will be there in a market. Today, if you go for for a job based on CCNA, hardly you will get any calls. Hardly, I'm telling, you'll get any job calls based on CCNA, CCNP. After that, if you are adding something like firewalls or if you're going for CCIE security, you'll have more opportunities in the market. Let's say someone is hiring based on firewall. Okay, you are a firewall engineer. Someone is hiring you based on the ESA or WSA. You already know those products. Someone is hiring you for ICE. You know what is ICE? I'll give you small information. ICE is about access management. Like small example I'm giving you. You guys go for when you travel, right? When you go at the airport, you guys get connected to a internet, right? As a guest, you guys get connected to a internet. But before that, what you have to do, you have to register yourself. You have to register yourself based on your mobile number or a passport number, right? So after that, you get one OTP, and that OTP gives you internet access for 1 hour or 2 hours, whatever it is. So how is that guest access management done? You're telling your identity. Hey, my identity is my passport number. My identity is my mobile number. That's what you guys are telling, right? That's why I call it as a identity service engine, telling your identity. So managing such type of access is done with this particular product. So overall, what I'm trying to tell is, if you have 10 skill sets in you, now you have 10 more diversified type of jobs opportunity, right, in a market. Somewhere, if you have opportunity for firewall, go for that interview.
somewhere you have opportunity for email security, go for that particular job, right? These things you'll get it only when you do this type of trainings. Now most of the time you don't have a visibility, आप लोगों को पता नहीं होता है कि हम करें तो करें क्या। आप लोग क्या करते हो, सीसीएनए कोर्स पार्शियली कर लिया, पहले पे कर दिया सीसीएनए के लिए, फिर पे कर दिया सीसीएनपी के लिए, सीसीएनए फिर सीसीएनपी के लिए पे किया, फिर सोचते हैं चलो फायरवॉल के लिए इनरोल कर लेते हैं, एक फायरवॉल फिर दूसरा फायरवॉल। आप एक बार देखो कितना कॉस्ट आपने दिया, 10-10 हजार करके भी आपने दिया, तो 10 कोर्स अगर आपने किए तो 1 लाख तो दे दिया आपने, ठीक है, और 10 हजार में तो मिलेगा नहीं, ठीक है, कहने के लिए है। तो आपको बेनिफिट्स क्या मिले, आपको बेनिफिट्स लिमिटेड चीजों से मिले, लेकिन अगर वही पैसा अगर आप कोई कोर्स पे लगाते हो, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम पे लगाते हो, तो उससे आपको बेनिफिट्स बहुत सारे मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू विल गेट बेनिफिट ऑफ entire technologies that comes under your CCIE security program or any other programs right now। आप में से कितनों को पता है कि ये सारे डिवाइसेस होते हैं सिक्योरिटी में? बहुत को नहीं पता होगा इस चीज, ठीक है। ये कब पता चला आपको? जब हमने आपको बताया तब आपको ये चीज पता चली। यही होता है जब आप कोई इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करते हो तो उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं होता है, और उस डिवाइसेस के बेसिस पे आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज मार्केट में बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि जैसे आप कोई इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स करते हो, जैसे सीसीआई सिक्योरिटी करते हो या साइबर सिक्योरिटी करते हो। साइबर सिक्योरिटी के बारे में मैंने अभी नहीं बोला है, मैं अब हम बोलेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो overall what I'm trying to tell is we have these many devices and these many products in one particular track. So if you guys take a enrollment for CCIE Security Integrated Program, then you are getting multiple combo things like these all technologies will come, ये सारे टेक्नोलॉजी उसमें आएंगे ही आएंगे, प्लस आपको फायरवॉल्स आ जाएंगे, टॉप फायरवॉल्स लाइक फोर्टिगेट आ जाएंगे, पोलो अल्टो आ जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन योर एरिया विल गिव ट्रेनिंग ऑन चेक पॉइंट फायरवॉल एज वेल, ठीक है। इतने सारे की स्किल्स को ऐड करने के बाद अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ जाते हैं, समझ गए? अब सबसे मेन पॉइंट, चलो आपने सीसीएनए कर लिया, सीसीएनपी कर लिया, सिक्योरिटी कर लिया, और मार्केट में जा रहे हो आप जॉब्स के लिए, आपने सारे फायरवॉल्स भी कर लिए, आप जा रहे हो मार्केट में जॉब्स के लिए, आपको जॉब नहीं मिल रहे हैं। Why? Because you are unable to clear interviews. The most important part. Now you might have a question, right? I did this many course, then why I'm not getting job? Why I'm not getting selected? See, out of 10 students, 2 students will be seriously working on their career. Understood? Out of 10, I told 2 students will only be working properly, right? 10 में से 2 स्टूडेंट सीरियसली स्टडी करेंगे, और उसके अलावा 8 स्टूडेंट जो होंगे वो अप एंड डाउन टाइप से स्टडी करेंगे। तो हम लोगों को क्या करना है, टोटल 10 स्टूडेंट्स को लेके चलना है, ठीक है। सो टू क्रिएट अ मोर अपॉर्चुनिटीज व्हाट विल डू, विल टेक अ स्पेशल क्लास एज अ interview mock interview preparation type of classes will be taking, and we'll take a mock interview as well. Understood? First of all, we'll give you a training on interview preparation. Understood? There are certain questions which will definitely come in your interview. We know based on our experience, ठीक है। हम लोगों ने इतने दिनों से इस करियर में, इस चीज में, इस फील्ड में जो इतना टाइम हम लोगों ने स्पेंड किया है, तो उसका तो कोई तो एक्सपीरियंस होगा ना। इतने सारे इंटरव्यूज हम लोगों ने क्लियर किए हैं, ठीक है। आप मेरे पिछले वाले कंपनी का पोर्टल पे अगर देखोगे, वहां पे आप देखोगे कि मैंने कितने सारे स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया हुआ है,
और उन लोगों का पैकेज 7 से 8 लाख मिनिमम है। सिर्फ सपने देखने से नहीं होता है कि हम आज सपने देख ले 7 से 8 लाख का मिल जाएगा, हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप लोगों को मेहनत करना होता है। यू हैव टू स्पेंड टाइम विथ अस, विल स्पेंड टाइम विथ यू, तो करियर बनेंगे, अपॉर्चुनिटीज तब बनेंगे। ठीक है, आप सीधा सोचते हो मैंने ये कोर्स कर लिया और सीधा हमको जॉब मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। आपका प्रोफाइल कब सेलेक्ट हुआ? जब आपका प्रोफाइल उसके जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से मैच किया। आप समझ लो, प्रोसेस को समझो। उसका जॉब, उसका रिक्वायरमेंट में क्या था? उसका रिक्वायरमेंट में था फायरवॉल, CCNA, CCNP, BGP, EIGRP, IPS। चलो, आपने राउटिंग स्विचिंग से भी ले लिया, सिक्योरिटी से भी ले लिया, आपका प्रोफाइल मैच कर गया, उसने आपको सेलेक्ट कर लिया, आपका प्रोफाइल सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, not a interview. I mean, interview has not been done. It's not cracked. Your profile has been shortlisted. अब उस shortlisted में से अब आपका इंटरव्यू होगा और आप फेल हो जाते हो। क्यों? आपने हायर हायर स्टडीज कर ली और पीछे की स्टडीज को आप क्या कर रहे हैं? आपने क्या किया? फॉरगेट, आई मीन आपने भुला दिया उसको। नाउ यू डोंट रिमेंबर अबाउट द प्रीवियस स्टफ। Interviews will start from L1, L2, L3, then they will take you till layer 7. Directly they won't take you to layer 7. ऐसा थोड़ी होता है। आप पहले 10 माले पे जाओगे, फिर 9 माले पे आओगे, या पहले एक पे जाओगे, दूसरे पे जाओगे, तीसरे पे जाओगे? कैसा होता है? नीचे से ऊपर जाते हो ना। सेम होता है इंटरव्यू में। इंटरव्यू में अगर आपने लेयर 1, लेयर 2 का जॉब का उस लेवल का क्वेश्चंस, if you are not able to crack those questions, why will they ask you, or why they will be interested in you for asking layer 7 questions, right? So these are the layer by layer steps that you have to crack for our interviews. स्टडी करना एक चीज है, चीजों को रिमेम्बर करना अलग चीज है, उसका प्रैक्टिकल करना अलग चीज है, और उसको जॉब में कन्वर्ट करना और उसको अप्लाई कर पाना अलग चीज है। आप लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है, आप लोग अपने दिमाग से क्या करते हो? चलो मैंने CCNA कर लिया, मैंने NP कर लिया, अब हमको जॉब मिल जाएगी, आई एम हैप्पी। डज नॉट हैपन लाइक दैट गाइस। वी हैव टू फॉलो द प्रोसेस। आप में इतने सारे की स्किल्स ऐड कर दिया जाता है कि आप मार्केट में जब जाते हो ना, तो माइट बी टुडे माई profile is selected based on, let's say for example, when I went through CCIE security, I went through these many technologies, correct? Now my profile got selected based on, let's say it got selected based on a DNA center. DNA center is nothing but digital network architecture. I'm giving you one example. Why did they select you? Because this is the current technology running in a market, and they have this product, and that product is matching with your profile. You got shortlisted not based on the firewall. I'm not talking about other products. They shortlisted your profile just because you had a DNAC in your profile. कब कहां से कौन मौका आए ये कोई नहीं बोल सकता है। तो 10 चीजें अपने आप में डेवलप करना ही करना पड़ेगा आपको। आज के डेट में आपके पास कोई चॉइस नहीं है। यू डोंट हैव अ चॉइस। आज से 20 साल पहले अगर कोई CCNA कर लेता था, they used to get a job of 2 lakhs for sure. CCNA means, okay, he's a good guy. In a networking, he knows something. Like 20, 25 years ago, if you see, you had a good opportunities. In today's date, if you say that I'll learn only CCNA and get a package of 10 lakhs or 5 lakhs, not possible, guys. आप राउटिंग स्विचिंग बैकग्राउंड से हो ना, आप राउटिंग स्विचिंग बैकग्राउंड से हो, फिर भी आपको बोलेंगे फायरवॉल आते हैं। ठीक है, आप साइबर सिक्योरिटी करते हो। साइबर सिक्योरिटी क्या है? व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी? देयर आर मल्टीपल थिंग्स गाइस।
You are learning CCNA, CCNP, that is routing and switching. That is pure networking. Understood? Now you have multiple paths over here. Like आप MBBS करते हो, कोई कान का स्पेशलिस्ट, कोई नाक का स्पेशलिस्ट, कोई दांत का स्पेशलिस्ट, ऐसे होता है ना। CCNA, CCNP आप लोग करते हो तो वहां से आप लोगों को एक बेस मिलता है नेटवर्किंग का। अब यहां से क्या चीज का स्पेशलिस्ट बनना है ये आपको डिसाइड करना है। सर्विस प्रोवाइडर में हमको सर्विस देने में, सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट, ISPs, इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है, सर्विस प्रोवाइडर के साथ जाएंगे। सर्वर्स में ज्यादा इंटरेस्टेड है, डेटा सेंटर में ज्यादा इंटरेस्टेड है, मैं डेटा सेंटर की तरफ जाऊंगा। हमको सिक्योरिटी बड़ा फैसिनेटिंग लगता था। आई मीन फ्रॉम बिगिनिंग इटसेल्फ आई वाज थिंकिंग ऑफ how these networks are getting secured, what type of products are included in the security. I mean, to secure the network, what type of devices are required. I was more interested about that. तो मैं सिक्योरिटी में आ गया। उसी तरीके से अब चीजें क्या हो रही है मार्केट में, आपने नोटिस किया होगा 2019 से लेके और अभी तक में क्या चेंजेस हुए हैं, कोई आइडिया है आपको? 2019 में क्या हुआ था और अभी तक में क्या इम्पैक्ट आया है, कुछ पता है आपको? अभी तक मल्टी स्किल कैंडिडेट देयर कंपनीज हायरिंग दे आर लुकिंग फॉर मल्टी स्किल्स Okay, बट that's true. फॉर दैट That's true. I'll give you a small clue. In 2019, there was a zero-day attack on a human. On a human, there was a zero-day attack. What was that? COVID. What is zero day? Zero day means an attack for which we don't have a solution. That is called zero-day attack. Not only for a network, for a human, that was a zero-day attack. In that zero-day attack, what happened? We were not prepared with the medicines for those type of situations. So later what happened? It took around 2-3 years to create a medicine, and then it got, solution was done for that COVID and all, right? At that particular moment, one industry was booming. That was IT industry. In IT also, especially networking was booming and cloud security was booming. Reason? Online, hybrid type of things started happening. 2019 के बाद ही आप लोगों ने ये चीज देखे होंगे कि क्लासेस ऑनलाइन भी हो सकते हैं, चीजें ऑनलाइन भी होती है। अब स्टूडेंट्स ऑनलाइन भी क्लासेस अटेंड करने लगे, वहां से आप लोगों ने ये चेंजेस देखना स्टार्ट किया। 2019, 20, 21, 22 तक हायरिंग सीधा स्काई रॉकेट किया। 2023 में डिक्लाइन कर गया हायरिंग, ले ऑफ्स ज्यादा होने लगे। एक्चुअल रीजन आप लोगों को पता नहीं है। चीजें अब क्या हो गया, फिजिकल हो गया। अब लोग जाने लगे ऑफिस। अब फिजिकल चीजें जब होने लगी तो ऑनलाइन उतनी रिक्वायरमेंट्स रह नहीं गई, ले ऑफ्स होने लगे। उस बीच में AI आ गया। अब AI का क्या इम्पैक्ट है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत बड़ा डर है, मिथ है। और क्या है, मैं उस चीज को शॉर्ट में आप लोगों को बता देता हूँ। एक नेटवर्किंग ही ऐसा जॉब डोमेन है जो इम्पैक्ट नहीं है AI से। But it's not like AI is not included. AI is included. At what level? Sorry guys. At what level? पहले नेटवर्किंग में, जैसे अभी नेटवर्क चल रहा है, डाउन हो गया। आपको कैसे पता चलेगा नेटवर्क डाउन हो गया? आपका सर्विस जब स्टॉप हो जाएगा तब आपको पता चलेगा। ठीक है, आप घर में इंटरनेट यूज कर रहे हो, इंटरनेट नहीं यूज हो रहा है, नहीं चल रहा है, तो आपको पता चलेगा चलो सर्विस स्टॉप हो गया। तो आपको तब आप टिकट रेज करेंगे, पर्टिकुलर वेंडर को आप कंप्लेन करेंगे, फिर वो सॉर्ट आउट करेंगे। कितना लेंदियर प्रोसेस है। स्टॉप हुआ, मैंने कंप्लेन किया, फिर उनका IT टीम ने उस टिकट को हैंडल किया, फिर वहां से टेक्नीशियन को भेजा, मतलब चीजें कितना लंबा गया ना। इसी चीज को अगर मैं समराइज कर दूं कि जैसे ही नेटवर्क डाउन गया, AI ने इन्फॉर्म कर दिया बिना कस्टमर को,
मैं उसको कंप्लेन नहीं कर रहा हूं, उसको पहले से इंफॉर्मेशन चला गया, नोटिफिकेशन चला गया कि दिस नेटवर्क इज डाउन एट दिस पर्टिकुलर प्लेस फॉर सो एंड सो रीजन, एंड आई डोंट हैव टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ इट. AI is keeping the entire report, entire record, and it is notifying that tech team that, hey, your network has gone down for these reasons. Do you want me to take action on that? If device is powered on, it can take a action on that automatically. ये AI का इम्पैक्ट होगा. अब आप लोगों को सीखना क्या है AI में? आपको सीखना है कि हाउ कैन आई यूज AI विथ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. आपको AI के भाषा में AI को बोलना है कि इसको फिक्स करो. ये चीजें आने वाली हैं. आपका EIGRP नहीं बदलेगा, आपका BGP नहीं बदलेगा, आपका फायरवॉल नहीं बदलेगा, but the way we work with or we interact with those devices will change. Understood? We don't need to know, any programming language to work with AI. You need to just give a clear, certic information, clear cut information, like, hey, like at your home you have Alexa, right? How do you give instructions? If you say play a song, will they follow you? No, they won't follow you. What you have to say, hey Alexa, play this song. So the way I tell the information to AI is important. Simple language. इसी चीज को अगर मैं पाइथन में कोड लिखूं तो उसका कोडिंग कितना होगा? इतना बड़ा होगा. और उसका अपना लैंग्वेज है, दैट इज कोडिंग लैंग्वेज. AI उसको सिंप्लीफाई करता है in the sense where you give a simple English language instructions and they follow you. आपको कोई मास्टरी नहीं करनी है पाइथन में, XML में, जावा में, कुछ चीज नहीं करना है. ये सिंप्लीफाइड चीजें होंगे नेटवर्क में, एंड दैट इज नॉट इम्पैक्टिंग अ लॉट टू नेटवर्किंग इंजीनियर्स. एक ऐसा ही जॉब है. अब कंटेंट राइटर्स जो थे उनका जॉब खतरे में है, क्योंकि कंटेंट राइटिंग AI से बेहतर कोई कर ही नहीं सकता है. ठीक है. ग्राफिक्स डिजाइनिंग, फिर भी उनके अपॉर्चुनिटीज और बढ़ रहे हैं भाई, ऐसा नहीं कि कम हो रहा है. नाउ दे हैव टू यूज दोज थिंग्स इन अ प्रॉपर वे. नाउ व्हाट आई विल टेल इज, where I required 10 peoples, today I can work with AI with 3 peoples. But only those guys who know AI can survive in this area. तो आप लोगों को AI के साथ चीजों को सीखना है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को सीखना है ताकि आपके अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकें. तो साइबर सिक्योरिटी मोस्टली हम लोग डेटा पे काम करते हैं. साइबर सिक्योरिटी कहाँ पे काम होती है? आपको नेटवर्क के बारे में पता है, सारी चीजें पता है. सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी गाय विल ट्राई टू they will defend as well, plus they will try to create attack as well. In a cyber security we have red team and blue team. I guess आप लोग को पता नहीं होगा, लेकिन उसमें ऐसे होते हैं जिसमें आप अटैक करना भी सीखते हो और अटैक को रोकना भी सीखते हो. ठीक है. तो लेकिन नेटवर्क सिक्योरिटी अलग चीज होती है. अभी जो फायरवॉल्स आपने पढ़े उस क्या के बारे में जो आपने जाने, वो क्या चीज के लिए होता है? नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए फायरवॉल्स लगाए जाते हैं, ट्रैफिक को फिल्टर करने के लिए, और उसमें और सारे बैरियर्स लगाते जाते हैं that are network security. But to perform the attack, to find what are the loopholes, for that we need a cyber security. साइबर सिक्योरिटी कब सेंस करेगा, कब कब ज्यादा मायने रखेंगे? जब आपको लूप होल्स के बारे में आइडिया हो. ठीक है. आपको पता है यहाँ पे पुलिस है, तो आप दूसरा कोई रास्ता लेंगे ना. It means there is a security which is nothing but your network security. I know there is a firewall, but I should know how to bypass that firewall. So that's where your cyber security comes into a picture. अभी मार्केट में साइबर सिक्योरिटी पे भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन सबका बेस एक ही होता है, नेटवर्किंग. जिसको नेटवर्किंग नहीं पता उसको साइबर सिक्योरिटी नहीं पता. और साइबर सिक्योरिटी का जॉब अपॉर्चुनिटीज एज अ फ्रेशर बहुत कम है, कंपेयर टू नेटवर्क सिक्योरिटी.
इसलिए कि साइबर सिक्योरिटी नीड्स अ एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स, लाइक जिसको पहले से नेटवर्किंग के बारे में कुछ आइडिया हो, उसके लिए साइबर सिक्योरिटी अच्छा अच्छा। लेकिन किसी को अगर डायरेक्ट साइबर सिक्योरिटी करना है वो भी कर सकते हो। ओके, मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिखा देता हूँ जो आपको नेटवर्किंग में और नेटवर्क जॉब्स, आइदर यू गो फॉर अ नेटवर्क सिक्योरिटी or enterprise or anything else, basically they'll ask you this type of questions. और कितने से आप लोग इसमें से इवैल्यूएट करके देख लो अपने आप को कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चंस के बारे में पता है। बेसिक चीजें जैसे OSI रेफरेंस मॉडल हो गया, ठीक है, TCP IP स्टैक हो गया, TCP और UDP हेडर हो गया, TCP हैंडशेक हो गया, TCP फ्लैग्स हो गया, IP हेडर्स हो गए, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में हो गया, differences between TCP and UDP, how packet travels on our internet, how DNS communications happens, what are the DNS type, how HTTP or HTTPS communication happens, how can you capture the packet and explain all the ways of web communication। जैसे हम लोग www.google.com टाइप करते हैं, आपको क्या लगता है कितने प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं? आप लोग सब वेब तो यूज करते हो ना, इतना तो कॉमन आप सब ही यूज करते हो, उसमें कितने प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं? नो आइडिया। यही चीजें हैं, ये तो बेसिक चीजें हैं जो आप डेली यूज करते हो और आप बताते हो कि हमको पता नहीं है, ठीक है। तो जैसे पहले डीएनएस क्वेरीज आएंगे, डीएनएस के रिप्लाई आएंगे, फिर HTTP और HTTPS के थ्रू आप लोग वेब कम्युनिकेशन करते हो, तो HTTP और HTTPS TCP बेस्ड हो गया, तो TCP 3 वे हैंडशेक बनाएंगे। सिक्योर कम्युनिकेशन अगर होगा तो SSL और TLS कम्युनिकेशन होगा, SSL और TLS प्रोटोकॉल यूज होंगे। उसके बाद HTTPS होगा। तो ये चीजें कैसे हो रही है अगर उनको नहीं एक्सप्लेन अगर कर पा रहे हैं आप, तो व्हाई वुड दे सेलेक्ट यू? सिंपल थिंग। So all these are the topics. Now, at layer 2, they might ask you about ARP conditions, types of ARP, and many other stuff. तो ये आप जान लो, बहुत सारी चीजें हैं जिनमें एक एक प्रोटोकॉल है। जैसे एक आईपी से प्रोटोकॉल है जिसमें हम लोग को जानने के लिए, एक आईपी से प्रोटोकॉल को जानने के लिए कम से कम 10 घंटे चाहिए होंगे। उसके बाद आप जाओ यार एक बार इंटरव्यू के लिए, एक बार देखो, अपने आप को एक्सपीरियंस करके देखो कि आप में कितने पोटेंशियल हैं। तो एक ही लेवल पे एक ही चीज पे बैठ के काम नहीं होता है, ठीक है। आप लोगों को अपना विजन बढ़ाना पड़ेगा, चीजों को एक्सपैंड करनी पड़ेगी टू गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। लास्ट एक चीज बोल के मैं अपना एंड करूंगा, और उसके बाद अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो। मान लो आज आपने एडमिशन लिया है CCNA CCMP के लिए फॉर एग्जांपल, ठीक है। आपको आज मार्केट में जॉब कितने की मिल जाएगी? 2 लाख 3 लाख, ठीक है। और आपको 6 लाख पे आने के लिए कितना टाइम लगेगा? 2 to 3 years, ठीक है। डबल होने के लिए कम से कम 2 साल तो मिनिमम लगेंगे ही, because they don't give you 100% hike, right? They give you 40%, 30%, like that. If you see, at least 2 years or 3 years it might take to reach 6 lakhs package। अगर वही चीज मैं 5-6, अगर 6-7 महीने अगर ढंग से पढ़ लूं और ढंग से चीजें पढ़ लूं, जो चीजें हमको पढ़नी है वो पढ़ लूं, और 5 से 6 लाख या 7 लाख के पैकेज पे अगर मैं चला जाऊं, आपने कितने साल सेव किए? लाइफ के 2 वैल्यूएबल साल्स आपने सेव किए, और अगले 2 साल में आप कहाँ पहुंचोगे? 10 लाख पे पहुंचोगे। सोचो, जिसने अपना करियर ही स्टार्ट 2 लाख 3 लाख पे किया, उसको 10 लाख पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? तो इन चीजों को आप लोग सोचो एक बार कि हमको पढ़ाई क्या करना है, कैसे करना है,
और क्या क्या टेक्नोलॉजीज पे करना है और क्या क्या मार्केट में अभी डिमांडिंग है। उस हिसाब से जब आप सोचोगे, थॉट प्रोसेस जब आपका ऐसा बनेगा, तो आप कुछ बड़ा कर पाओगे। और वही बड़ी बात नहीं है, आप सिर्फ फॉलो करो स्टेप्स को। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड टेक्नोलॉजीज। सेकेंड थिंग, know all the technologies properly, like get one integrated program which gives you multiple options. उसके बाद क्या करना है, सारे चीज़ों को प्रिपेयर करना है अच्छे से। इंटरव्यू प्रिपेयर कर लो। इंटरव्यू प्रिपरेशन एक बार हो जाने के बाद मॉक इंटरव्यू दे दो। मॉक इंटरव्यू में हमारे साथ या जो भी हमारे ट्रेनर्स हैं उनके साथ एक बार बैठ के क्लियर कर लो। हमारे सर्टेन क्राइटेरियाज होंगे, इन चीज़ों में आप फिट बैठते हो या नहीं बैठते हो। मान लो हमने कंपनी को बुला लिया, आप कंपनी के साथ गए इंटरव्यू देने के लिए, उन्होंने आपसे पूछा बताओ डीएनएस क्या है। अब आप बोलोगे डीएनएस टीसीपी है कि यूडीपी है, आपको पता ही नहीं है। डीएनएस दोनों होते हैं, टीसीपी और यूडीपी बेस्ड दोनों होते हैं। So in what situation DNS uses TCP and in what situation DNS uses UDP, you should have that proper idea. टेक्निकली अगर आप साउंड नहीं करते हो तो क्या होगा, आप सेलेक्ट नहीं होते हो, रिजेक्ट हो जाते हो, डीमोटिवेटेड हो जाते हो। तो पहले आप हमसे मोटिवेटेड हो जाओ, यहाँ पे क्लियर कर लो इस बैरियर को। उसके बाद आप जाओ फिल्टर होके देखो आप सेलेक्ट होते हो या नहीं। ये एक प्रोसेस होता है नेटवर्क करियर बनाने का। मैंने सिंपल शब्द में आप लोगों को बता दिया। अब यहाँ से आपकी मर्जी, ठीक है। एक विजिबिलिटी देना था हमको जो मैंने दिया, ठीक है। मेरे मेरे तरफ से हो गया। नाउ इफ यू गाइस हैव एनी क्वेरीज क्वेश्चंस प्लीज लेट मी नो गाइस। Yes, sir. या Sir, which certificate are required to enter the cybersecurity and फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड गाइस, डोंट understand? फोकस ऑन सर्टिफिकेशन, डोंट फोकस। सर्टिफिकेशन क्या करते हैं, सर्टिफिकेशन, चलो आज मैंने कोई सर्टिफिकेशन कर लिया, चलो पोलो ऑल्टो, फोर्टिगेट, सीसीएनए, सीसीएनपी कोई कर लिया, वो देख के हम अपना प्रोफाइल को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन क्या वो सर्टिफिकेशन आपको जॉब दिला देगा? नो, ऐसा नहीं है, मिथ है। आप लोग प्लीज इसको समझो, सर्टिफिकेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट। सर्टिफिकेशन जरूरी नहीं है आप लोगों को जॉब पाने के लिए, आपका की स्किल्स होना बहुत जरूरी है। अगर आप में सच में काबिलियत है, अगर आप सच में नेटवर्किंग अच्छे से जानते हो, आप में वो की सेट्स हैं, यू आर गेटिंग अ जॉब। So what is the path? So can we Path, directly reach enroll into this security, or should we go one by one, first CCNA and then CCNP and then CCI and then go along with the multiple security tools which you have already displayed us and guided I us? told you the same thing right now. Okay, you can't directly jump at the 10th floor, right? You Exactly. have to start from first floor, second floor, third floor, then you can reach at, you know, at the top floor. So first of all, your Networking is basic, and you know. yeah, I'm giving you the career path. Sir, I have one Okay, question. thank you. Step by step, Message one by in one, chat. one by one, guys. Please hold on. First of all, Okay. we have to go with CCNA. That's your fundamental. Then go for CCNP, routing and switching. Then go for CCNP security plus CCIE security. This is the complete package, but this will only won't give you opportunity. मार्केट में सिर्फ सिस्को है क्या? ऐसा तो नहीं है। सिस्को ने आपको क्या दिया? सिस्को ने आपको एक ओवरऑल टेक्नोलॉजी के बारे में बता दिया। सिस्को के अंदर सीसीआई सिक्योरिटी के अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगे, फायरवॉल मिल जाएंगे, ईएसए, ईमेल सिक्योरिटी, वेब सिक्योरिटी, डिजिटल नेटवर्क आर्किटेक्चर, फायर पावर डिवाइसेस, स्टेल्थ वॉच, एसआईएम डिवाइस, दुनिया भर में जितने सिक्योरिटी के लिए चीजें यूज होती है उसने आपको एक बंडल दे दिया, आपने बंडल को समझ लिया। अब उस बंडल में से कोई अपॉर्चुनिटीज आती हैं, आप उसके लिए एलिजिबल हो। लेकिन मार्केट में अगर आप इसी के साथ, अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट
एज अ कम्बो आपको दे दिया जाता है, जैसे पोलो ऑल्टो, राइट। उसके साथ आपको दे दिया जाता है 40 गेट फायरवॉल, प्लस आपको इंटरव्यू रैप करवा देंगे। तो आप क्या बन जाते हो, एक पैकेज बन जाते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं जो आपको एक प्रॉपर पाथ देती है, और जहाँ से आप जब मार्केट में जाते हो अप्लाई करने के लिए, तो आपको सारी चीजें प्रॉपरली अलाइंड होते हैं चीजों। अब कोई, आप अपने मन से आते हो, सिर्फ CCNA कर लेते हो, फिर आपको मन होता है तो एक फायरवॉल कर लेते हो, तो ऐसे में चीजें बिखर जाती है, पैसा भी लग गया, टाइम भी चला गया, और प्रॉपर तरीके से आपने चीजों को समझा भी नहीं। तो एक पाथ को आराम से चूज करो। हाँ जी, बताइए। सर एक अभी हमने आपका जो कोर्स शुरू हो रहा है 10th ऑफ जनवरी से, पालो आल्टो और फायरवॉल का जो है, सर उसमें एनरोल किया है। एट द सेम टाइम अभी मैं क्या कहते हैं CCNP एंटरप्राइज कर रहा हूँ, तो ये बेनिफिशियल रहेगा सर कोर्स? एकदम रहेगा, ठीक है। तो अभी आपने NP कर लिया, फायरवॉल कर नहीं सर, लिया। कर रहा हूँ सर, अभी साथ साथ क्लासेस होती है सर NP की, अभी CCNP एंटरप्राइज की। देखिए, हर चीज में अपॉर्चुनिटीज हैं। कोई CCIE एंटरप्राइज करते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि NP तक स्टिक मत रहो, उतना विजिबिलिटी नहीं मिलता है NP लेवल तक। आप सच में अगर मैं बोलूँ ना, NP लेवल तक आपको उस लेवल की विजिबिलिटी नहीं मिलती है, आप लोग समझ नहीं पा रहे हो इस चीज को। चलो एक एग्जांपल देता हूँ। आपने नर्सरी कर लिया, LKG UKG कर लिया, आप स्टैंडर्ड 1 में गए। स्टैंडर्ड 1 के लिए LKG UKG कैसा लगेगा? इजी लगेगा। क्यों लगा इजी? क्योंकि आपने उससे ऊपर की चीजें पढ़ ली। तो CCIE वो चीज देता है आपको, आपको बहुत सारे टेक्नोलॉजीज का विजिबिलिटी देते हैं, एक्सेस देते हैं, जिसके वजह से आप मार्केट में जब जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए जाते हो, आप बोल पाते हो, यू कैन स्पीक अबाउट इट, यू कैन टेल अबाउट ऑल दोज स्टफ। एक चीज से इंप्रेशन नहीं बनती है, इंप्रेशन बनाने के लिए आपको बहुत सारे नॉलेज की जरूरत होती है। सो मेंढक जैसा नहीं बनना है, ठीक है। उससे बाहर निकलो, एक्सप्लोर करो अपने आप को, ठीक है। एक बार देखो तो सही मार्केट में जॉब अपॉर्चुनिटीज किस बेसिस पे है। जैसे मैंने एक प्लेटफॉर्म का एग्जांपल दिया, या एनी अदर क्वेश्चंस गाइस? Yes, sir. I have one question. या और सर मैं ये पूछ रहा था कि स्टार्टिंग में वन CCNA बाय एंड वन बाय वन। CCNP करके हेलो या टेल गाइस, सालिग्राम, यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। या सर सर विश्वरंजन, स्टार्टिंग में जैसे प्लीज अभी बी मैंने ऑन। CCNA और CCNP किया हूँ, कुंदन सर का क्लास अटेंड किया हूँ, हाँ जी। बट मैं अभी स्टार्टिंग में जॉब चाह रहा हूँ नेटवर्किंग में। तो क्या मैं जॉब लेके ये आगे का कोर्स कर सकता हूँ, जैसे CCNP सिक्योरिटी, CCIE सिक्योरिटी और पालो अल्टो FortiGate? ओके, सो देखो क्या होता है कि अभी आप जॉब अगर करने लगो, तो इसमें क्या होती है, एक रुकावट आ जाती है, ठीक है। अभी आप पढ़ने के मूड में हो, और उसके साथ आपके लेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है। शादी हो गया, बच्चे हो गए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाते हैं। काम जैसे आपने पकड़ा, तो बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो काम करते हैं वो नहीं पढ़ते हैं, वो वीकेंड्स में अपना टाइम स्पेंड करते हैं अपनी की स्किल्स को अपडेट करने के लिए। और एक फायरवॉल को वीकेंड में खत्म करने के लिए कितना टाइम लगेगा, यू कैन इमेजिन दैट, राइट। So what I'm telling is, if you have sufficient time, if you have money, or if you have, if you want a key skill, go for it. जब आप पढ़ने के मूड में हो तो उसको पढ़ो, ब्रेक मत लगाओ, ठीक है। ये बेटर होता है। लेकिन अगर कोई काम, इफ समवन इज वर्किंग, it's better to develop their key skills in a weekend classes, that's better, but keep updating yourself. जैसे ही आपने अपने आप को रोका अपडेट करने से, आपका अपॉर्चुनिटी वहीं तक था, आगे का विजिबिलिटी खत्म हो जाता है, ठीक। ओके, एनी मोर Sir, क्वेश्चन? I have a question, sir. या टेल मी।
सर भाई मैं एक अभी क्वेश्चन, मैंने सी क्वेश्चन डाल दिया है चैट में। Okay, I'll see the chat. Yeah, Vicky, tell me. सर मैं चाहता हूँ रिमोटली वर्क करना नेटवर्किंग में। Mm-hmm. और मैं अभी करंटली सीसीएनए कर रहा हूँ, तो सर आप मुझे वो बात बताइए जहाँ मैं रिमोटली मुझे वर्क ज़्यादा मिल सके। Okay. आप CCI हब के बारे में जानते हो? हाँ सर, मैंने ऑफलाइन CCI क्लासेस भी हब वहाँ में किया है। और CCI हब में कौन कौन ट्रेनर्स हैं? Who are the trainers? लव सर Law, और Law पुनीत सर। sir and Puneet sir, you know, पुनीत right? सर, They यस सर। are working as well and they have their own business as well, right? यस सर। Both guys are working from home, right? And यस on सर। what basis they have got these opportunities to work as a home, I mean, सी to work from a home? Not based CCIE। on CCNA or NP. They have multiple key skills in them. ठीक है, अगर आपको वर्क फ्रॉम होम लेना है आप ले सकते हो, ठीक है, लेकिन एज अ फ्रेशर कोई भी आपको झट से वर्क फ्रॉम होम दे दे, ऐसा चांसेस बहुत कम है मार्केट में। ठीक है, तो की स्किल्स पे काम कीजिए, वर्क फ्रॉम होम भी मिलेंगे। लाइक पुनीत सर हैज लाइफ टाइम वर्क फ्रॉम होम, बट you have to see the key skills that he has developed in himself, right? तो ऐसे ही हवा में सोच के नहीं होता है, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा चीजें। ठीक है, ओके, ठीक है सर। नेक्स्ट विल सी व्हाट क्वेश्चन वी हैव इन अ चैट। ओके, सर सो या टेल मी। सर सर ये वीकेंड पे जो हम कोर्स शुरू करने वाले हैं सर, पैलो वाल्टो एंड दिस वन, उस पर थोड़ा सा आप लाइट दे सकते हैं सर, क्या क्या होगा उसमें? पोलो ऑल्टो के एंटायर कोर्सेस हम पढ़ाएंगे उसमें। अभी क्या है, पोलो ऑल्टो और फोर्टीगेट सब ने अपना जो कंटेंट है, द वे वी गिव अ ट्रेनिंग, दैट हैज बीन चेंज्ड नाउ। उन लोगों ने सब ने मॉडिफाई किया है। उस मॉडिफिकेशन के बारे में हम बताएंगे, क्या मॉडिफिकेशन हुआ है, क्या कंटेंट न्यू एडेड हुए हैं, क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, ये सब चीज हम उस सेशन में बताएंगे। और बकायदा जो कंटेंट उन लोगों ने दिया हुआ है और जिस लेवल पे उन लोगों ने प्रैक्टिस करने के लिए बोला है, हम लोग उसको एग्जीक्यूट करेंगे विथ आवर लाइसेंस्ड डिवाइसेस। इस वीक के एंड में सैटरडे तक हम लोग के पास पोलो ऑल्टो हार्डवेयर आ जाएंगे। नेक्स्ट वीक तक उसका वीडियो बन के आप लोग को यूट्यूब पे मिल जाएगा। So as per the curriculum, whatever we need the licensed product, I mean the feature wise whatever we need, आपको ट्रेनिंग में वो सारे चीजें मिल जाएंगे। ठीक है, तो पोलो ऑल्टो फोर्टीगेट पे मैं 2016 से काम कर रहा हूँ, तो तब से अभी तक जो भी मेरे एक्सपीरियंस है, प्लस जो हार्डवेयर के लाइसेंस होंगे और उसमें एआई के फीचर्स इंक्लूड किए गए हैं। ओके, नोट डाउन, this time they have precisely increased a feature of AI in Palo Alto firewall, and Yes. I'll teach you those things as well. ठीक है, एंड सर विल बी ओके, मतलब हमारे पास तो सीसीएनए की बेसिक नॉलेज है, थोड़ी बहुत सीसीएनपी की नॉलेज है, हमारे को समझने के लिए विल बी मतलब जिसको ओके? CCNA और CCNP ऑलरेडी हो चुका है उसको फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली फायरवॉल अटेंड कर सकते हैं। और Palo Alto FortiGate चेक पॉइंट अटेंड करने के लिए कोई अलग से फायरवॉल की प्रीरिक्विजिट्स नहीं होती है। यू डोंट हैव टू गो फॉर ASA, आप डायरेक्टली Palo Alto के लिए जा सकते हो। ठीक है, तो बेसिक नेटवर्किंग अगर आपको पता है, CCNP तक ले लो, CCNP तक अगर आपको पता है, यू कैन गो फॉर Palo Alto trainings. See, starting date and all, if you want, you can take information from our counselors, sales team. Okay, I won't be a right person to give you this information. Okay, here I am for a technical counseling or whatever the information, career path, if you want, that I can help you guys. ठीक है, हाँ, regarding lab, one of you were asking me. Now, since we all have built our lab, physical labs are now ready. ठीक है, हमारे physical labs दूसरे जो building है उसमें ready है, and virtual labs are also ready. So if you guys see here, these are our virtual labs. अब यहाँ पे आप लोगों को सारे डिवाइसेस के एक्सेस वर्चुअली दिया जाएगा। Day, night, 24/7 labs will be available. If you see here, username I'll give as a root,
Password I won't tell. Okay, I have logged in here. Guys, can you see here? If I click on this, एक बार देखो क्या कॉन्फ़िगरेशन है इस सर्वर का। 4 TB का स्टोरेज है, 512 GB का रैम है, ठीक है। और यहाँ पे इसका सर्टेन गीगाहर्ट्ज यहाँ पे दिया हुआ है सीपीयू का, ठीक है, जिसमें थ्रेड्स हम लोगों को ड्यूल सीपीयू है, 48 कोर्स है, 48 इंटू 2 कर दो, उतने हमारे पास वर्चुअल सीपीयूज हैं। आप सोच के देखो, इतने इतने सारे 4 सर्वर्स आए हुए हैं जिसपे हम लोग इतने सारे लैब्स बनाएंगे। सो लैब वाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, फिजिकल डिवाइसेस वाइज, एनी टेक्नोलॉजी वाइज, वी आर नोवेयर बिहाइंड। इतना चीज आप लोगों को बोल दूं, ठीक है। तो खुल के जो चीज आप लोगों को ट्रेनिंग लेना है लो, और एंड टू एंड करवाएंगे उसका। अगर ना हो 2 बार रिपीट करो, 3 बार रिपीट करो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, ठीक है। दैट्स ऑल आई कैन से। Okay guys, I hope this was helpful for you guys. What is the timing for CCIE Security weekend class? Timing and all you guys can take it from cells guys, okay? Okay. Yeah. सर, हाँ जी, हाँ जी, हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर, वो आपके वहाँ मैंने सीसीआई में इनरोल किया है, बट वो जैसे अभी आप बता रहे थे, तो सीसीआई और सीसीआई सिक्योरिटी ये दोनों अलग है क्या? अलग चीज है। सीसीआई एंटरप्राइज अलग होती है, सीसीआई सिक्योरिटी अलग होती है, ठीक है। आप काउंसलर से बात कर लो, वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे, बता देंगे, ठीक है। गाइस, दिस टाइप ऑफ सेशंस विल कीप हैपनिंग, ठीक है। हम लोग इस टाइप के सेशंस करते रहेंगे जहां पे आपको विजिबिलिटी थोड़ी बहुत मिलती रहे हमारे तरफ से, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशंस का अनाउंसमेंट मैं बहुत जल्द कर दूंगा। या प्लीज टेल मी Sir, I have a doubt. Sir, please, sir, guys, share. one minute, we have some query over here. Hold on, I'll take your query as well. We don't need any programming language required as per the AI, right? So how could we get the AI in networking? Because we have already built-in tools for the networking, Exactly. or we have to learn some language to make that. See, AI is a technology which gives you built-in feature. That's what You don't have to develop anything, rather you have to interact with AI with common English language. Like, because when we are saying, hey Alexa, you have to play this Exactly. song, so basically for that purpose we have to, or any person, maybe a developer can make a programming language for that, so that they can understand our language. See, there are For different. that purpose we have to do that programming work, or that's what Not exactly. We don't have to work on the programming part because we are not a developers. We are networkers. We are networking guy, and networking guy has nothing to do with the development part. So we take a tool which is pre-created. We take an tools like, let's say for example, ChatGPT you are taking. Yes. That's a pre-developed tool. Same way, nowadays we are getting multiple tools which are developed by their own companies. For example, you take a Airtel. Airtel have their own AI which deals regarding their product. Same way, we'll have our own AI tools which will know about our tool information. For example, AI won't give you all the commands of all your devices, router or switches, but the tool which our company has built, that will have the entire information about my product, about all the troubleshooting documents and all everything. So whenever you give an instructions to a AI will give you all those related documents and informations to you. But you are not a person who will be developing that AI tool. That's what I'm asking. Basically, because we only get the tool for as per the purpose. Correct. That is only required. So as a networking engineer, this is the main thing I'm trying to explain you guys. We are not getting impacted by developer part. So networking is not getting impacted in that way as we think. AI has come. Now it will be impacting, it will take all our jobs. Not in all the sectors, but it will impact all the technologies, add-on things will be there
to make your things simplified, but they are not It can replacing. enhance the networking part if we are learning any programming language. It will, but now that also has a use case again. Useless. I mean, use case. Such a use case. It has a use case again. Now, let's say, for example, in your network, you have 5 routers. Mm-hmm. To configure 5 interfaces, you'll need, let's say, 10 commands, for example. Whereas, if you have to do same thing with some script, some programming language, now you have to use Python, you have to use some container, you have to use some programming languages, so many things you have to do. Rather than doing so many things, why would you go with programming language? I mean, you could directly take a console and you could directly configure a router, right? So we basically misunderstand where programming will be used. That is not a small network, not a mid-sized network. It is used for large network. Now let's say I have hundreds of router. I have to give a command to configure hundreds of interfaces in a second. So I'll write a script for 100 routers. I'll run here, and that script will be used on hundreds of router, and it will configure all the routers interface just in a minute. Now that manpower, think about configuring 100 routers for 100 interfaces in a previous time, how much time it would take. I mean, it would definitely take 1 week, hundreds of locations, and time to travel, and the manpower, I mean, labor type of work was done. See, now we have such type of devices, like we have DNAC device, SD access, software defined access type of tools, or the devices has been developed by network or by Cisco. Currently they have given, right? In that, you especially, I mean, you were little tensed about programming language, right? That problem has been solved by DNAC device. If you see DNAC, I'm telling you about one particular device. In that device, you have centralized management of automation as well. Okay, just connect your devices and push the configuration. It will push that configuration to all the hundreds of devices which are connected with that particular DNAC device. I mean, things are already simplified. So if you know network, if you know, it's a benefit for you, I would say. If you know Python, if you know programming language, you will know what is happening in a backend. Yes, that thing will be clear to you. But let's say if you are a fresher, if you don't have an idea about what is going on in a backend, if you just like a layman, if you're thinking about, okay, giving an instructions, okay, I'll give an instruction and I'll get output, that's it. But you won't be having that knowledge which programmer is having, right? So that's a plus point even. That's a plus point, I guess. That's what I'm asking. Yeah. If anybody know about the language, that is backend work, so that is, it can give you the plus point as if you are getting non-programmer. Not programmer. I mean the coder, you can say, like. Thank you. Yeah, thanks. Okay, I'll see you guys in the next session, guys. Okay, take care.